evening, everyone. My name is Sakshi, and in this particular session, we would be discussing certain important judgments by Supreme Court and High Court in the month of December 2021 and couple of days of January 2022. So दोनों ही टाइम के जजमेंट्स इसमें इंक्लूडेड है, कुछ पार्ट्स दिसंबर के एंड कुछ पार्ट्स जनवरी 2022 के. So let's just get started. The first decision is by Supreme Court, where Supreme Court has decided that mere statement or common intention may not attract Section 34 of IPC. So Section 34 specifically mention करते हैं common intention को. But सवाल यहाँ पे ये उठता है कि what if there is a situation where somebody does have an idea about certain crime that is going to take place, और शायद वो पार्टी भी रहा होगा उस पर्टिकुलर डिस्कशन के जब ये पूरा डिस्कशन चल रहा था फॉर कमिटिंग दैट पर्टिकुलर क्राइम, बट बाद में अगर वो बैक ऑफ कर ले या वो उस पर्टिकुलर एक्ट का पार्ट ना बने, सो विल दैट पर्सन बी लायबल under Section 34 or not? So Supreme Court went on explaining that mere common intention per se may not attract Section 34 sans action in furtherance. मतलब वहां पे एक्शन होना जरूरी है. जब तक कोई फिजिकल एक्शन नहीं है हम उसको वहां पे कंसिडर नहीं करेंगे that the person shared common intention. Supreme Court also went on giving certain guidelines with respect to Section 34's application. तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला Section 34 creates a deeming fiction by infusing and importing a criminal act constituting an offense committed by one into others in pursuance of common intention. तो एक एक्ट होना चाहिए in pursuance of common intention, first thing. Secondly, the intent of Section 34 is to remove the difficulties in distinguishing the act of individual member of a party acting in furtherance of a common intention. So ये एक पर्टिकुलर प्रोविजन है जो आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में टू अंडरस्टैंड who were party to the crime and who are not. Further guidelines जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में दी that were what is required is a proof of common intention. मतलब आप जनरली किसी को बोलो कि 3-4 लोग मिलके प्लान कर रहे थे, बैठे थे, साथ में डिस्कशन कर रहे थे, does not mean that everybody had a common intention. You will have to bring conclusive proof to show that there was a proper common intention among each other. Next, the onus would be on the prosecution. So it would be on the prosecution to prove कि यहाँ पे common intention exist करता था हर party में who has been accused of that particular crime. The next, quality of evidence. Just mere saying that there was common intention would not be enough. There should be proper evidences to prove the case, and as I told you, there should be a proper action. तभी हम कहेंगे. So anybody who was just a part of the planning or who was just sharing a particular statement or in general any discussion will not be considered as a part of common intention. Moving on, Supreme Court elaborated the long-standing plan needed for common intention under Section 34. So Supreme Court ने यहाँ पे specify किया कि हम कब कहेंगे कि 2, 4, 5, 6 जितने भी लोग हैं इनका common intention कब है. Whether there has to be a long set of conversation and planning या common intention at the moment पर भी आ सकता है. So court ने यहाँ पे बोला the case is Gulab versus State of Uttar Pradesh. Court held that element of common intention under Section 34 of IPC is proven if the accused by his words or action indicate his assent to join in the commission of the crime. Yes. जब कोई अपने फिजिकल असेंट या इस तरीके के एक्ट से शो कर रहा है that he wants to be a party to the crime, तभी हम उसका common intention कंसिडर करेंगे, नहीं तो हम common intention कंसिडर नहीं करेंगे. Next, there may not be long interval between the act and the premediation. जरूरी नहीं है कि लंबा डिस्कशन हुआ हो, जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक प्लानिंग चली हो. क्या ये उसी मोमेंट पे जो क्राइम होने वाला है तब भी डेवलप हो सकता है? यस. मूविंग ऑन, less than 5 person may be charged for unlawful assembly if the same accused are not identified, decided by Supreme Court in the case of Mahendra versus State of MP. So court ने कहा कि for an example, let's say there are 7 people who actually committed a crime, and because there were 7 people who went ahead, did certain things which qualified as a criminal act under the definition of unlawful assembly, इन 7 में से 3 अगर absconding है, 3 भाग जाते हैं या उनका अता पता नहीं है या हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, बट इट वॉज वेरी मच क्लियर कि जो ये एक्ट हुआ है वो 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने किया है, तो हम इसको अनलॉफुल असेंबली के अंदर कैटेगराइज करेंगे. एंड द 4
पीपल जिनको हमने अरेस्ट किया है, क्या वो अनलॉफुल असेंबली के लिए भी चार्ज होंगे? यस. सो इवन इफ the assembly, then unlawful assembly was conducted by 5 or more people and couple of them are absconding or unidentified, yet it would be unlawful assembly अगर ये establish हो जाए कि एक्ट जब हुआ था तब वहां पे 5 या 5 से ज्यादा लोग मौजूद थे. कोर्ट ने यहाँ पे एक और चीज क्लियर करी. कोर्ट ने क्लियर किया that if more than 5 are charge sheeted and face trial and some of them are acquitted, then the remaining cannot be convicted for the offense under section 149 IPC, that is unlawful assembly. मतलब लेट से अगर 8 लोग थे और 8 लोगों की चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल चलता है, बट 4 of them गेट एक्विटेड, सिर्फ बचे 4, और अगर सिर्फ 4 ही हैं जो कॉन्विक्ट हो रहे हैं तो फिर वो अनलॉफुल असेंबली नहीं है, बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ अनलॉफुल असेंबली देयर शुड बी एटलीस्ट 5 people. Further, Kerala High Court has asked the government to frame certain guidelines to outlaw conversion therapy. Now, what is this conversion therapy? The case has been filed by Kerala versus State of Kerala. It's an organization working for the queer rights. Conversion therapy, as specified in the order of the court, which mentions that it is an attempt, treatment, or physiotherapy to change or suppress a person's sexual orientation, gender identity, or जेंडर एक्सप्रेशन. बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, क्लिनिक खुल गए हैं जहां पे लोगों ने ट्रीटमेंट देने शुरू कर दिए, जहां पे लोगों का ये मानना है कि अगर कोई भी पर्सन गे है, लेस्बियन है, बायसेक्सुअल है, क्वर है, एसेक्सुअल है, उसको सर्टन थेरेपी देके स्ट्रेट बनाया जा सकता है. नाउ बिकॉज हमारी सोसाइटी अभी उस सिचुएशन में है जहां पे हम बहुत ज्यादा एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और कुछ लोग तो ये मानने से ही मना कर देते हैं कि इस तरीके के डिफरेंट सेक्सुअलिटी एग्जिस्ट कर सकती है सोसाइटी में. अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन प्रेशराइजिंग देयर फैमिली मेंबर्स हु आर नॉट स्ट्रेट, मे बी देयर कॉलीग्स, in general people in the society, to go ahead with the therapy and get themselves converted into straight. Now, not understanding the point कि gender sexuality आप खुद से choose नहीं करते हो. That is how a person is born, and this is not something that can be corrected with any sort of treatment. तो जब ये चीज हाईलाइट हुई, केरला हाई कोर्ट वेंट ऑन सेइंग कि ऐसे सारे कन्वर्जन थेरेपी के जो भी क्लिनिक्स चल रहे हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर्म होनी चाहिए और इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी स्टेट में नहीं होना चाहिए, बिकॉज फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन. Person appointed on compassionate ground entitled to the same pay as other employees. Yes, the case is of Uttar Pradesh. अब यहाँ पे सिचुएशन ये था कि जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया था इन प्लेस ऑफ हिज फादर, बिकॉज द फादर लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू कोविड, तो वो पोजीशन यूजुअली यूपीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके थ्रू फाइल किया जाता था, उसके थ्रू बेसिकली फिल किया जाता था. एंड क्योंकि वो पीएससी के थ्रू फिल किया जाता था, देयर वर सर्टेन पर्क्स अटैच्ड or certain kind of incentives attached to that position. Now, when the compassionate employment was given to the son, यहाँ पे बेटे को बेसिक सैलरी तो दी जा रही थी, बट जो बाकी के पर्क्स और जो उसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स है वो नहीं दिए जा रहे थे. When the matter was challenged, गवर्नमेंट ने यही कहा कि बिकॉज ही वॉज अपॉइंटेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स उसको सारे बेनिफिट्स नहीं मिल सकते. कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपॉइंटमेंट कैसे हुआ है. If appointment is done through PSC or if the appointment is done on compassionate grounds, once the person is appointed, उस पोजीशन के साथ जो भी चीजें अटैच्ड है, whatever benefits, whatever extra incentives should be provided the person to the person who's holding the position. So अगर वो compassionate ground पर भी appointed है तो उसको वो सारे ग्राउंड्स पे वो entitled है जो एक जनरल एम्प्लॉय को उस पोजीशन पे रहकर मिलते. Next, no consumer case against medical officer rendering free services for hospital. Yes. So, if you go through the Consumer Protection Act and specifically the definition of service there includes something which is paid. Services वो चीजें हैं जहां पे आपने उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए पे किया है. अब सवाल ये उठता है कि what if there are certain free medical checkups or any medical treatment or any medical service which is given completely free of cost. अब अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है तो क्या उसमें किसी भी तरीके के नेग्लिजेंस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अट्रैक्ट हो सकता है क्या? क्वेश्चन यही था कोर्ट के पास इन द केस ऑफ निवेदिता सिंह वर्सेस आशा भारती. कोर्ट ने यहाँ पे रेफर किया
a precedent case of VP Shanta. It's a landmark judgment with respect to medical negligence. और कोर्ट ने यहाँ पे यही बोला that if the service rendered by the hospital does not fall within the ambit of section 210 ऑफ द एक्ट बीइंग फ्री, तो फिर उसको हम सर्विस के अंदर नहीं कंसीडर करेंगे. सो डेफिनेशन ऑफ सर्विस के अंदर से वही एक्ट आएंगे जिसके लिए आपने पैसा दिया है. जो भी चीज आपने फ्री में ली है या जो भी सर्विस आपको फ्री में मिली है वो सर्विस की डेफिनेशन के अंदर क्वालिफाई नहीं कर रही है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट विल नॉट बी अ केस फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस. Now, I'm sure you would be aware of this particular news, and this was almost everywhere, all the social media channels, because it's a huge decision taken by the Union Cabinet. So, Union Cabinet ने clear किया है proposal to raise marriageable age of women from 18 to 21 years. तो लड़कियों की शादी करने की एज अब 18 से बढ़ाकर 21 साल की जा रही है. We are yet to amend certain पर्सनल लॉज, तो स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये सब अमेंड करना अभी बाकी है. बट सेंटर ने कैबिनेट ने ये जो प्रपोजल है इसको क्लियर कर दिया है. अब सवाल उठता है कि ये क्यों किया गया. तो इसके पीछे बहुत सारी रीजन थे. सबसे पहला, आज तक कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं मिली बताने के लिए कि क्यों लड़कियों की 18 रखी गई थी एज और लड़कों की 21 रखी गई थी. कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो बता पाए कि ये 3 साल का डिफरेंस वाज एसेंशियल. सो बिकॉज देयर वाज नो साइंटिफिक बैकिंग एंड द ओनली रीजन कि लड़कियों की एज कम क्यों रखी गई थी वाज द पेट्रियार्कल स्टीरियोटाइप. बिकॉज हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है. In general, we have been practicing this kind of society, the structure of the society completely patriarchal in nature. यही रीजन था कि लड़कियों की एज कम रखी गई थी और ये मान लिया जाता था कि that would be the reasonable age for them to get married. अब एक कमीशन बनाया गया था which was headed by जया जेटली. इस कमीशन ने जब थॉरो रिसर्च करी, they realized that there are certain problems that women face जिसको हम कर्टेल कर सकते हैं, जिसको हम रोक सकते हैं अगर हमने उनकी मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया गया. With respect to motherhood, because obviously जितनी जल्दी शादी होगी, it's a general concept in the society that the moment a person gets married, within a year or two they would be having children of their own. So if the girl is getting married at a pretty younger age, there's a absolute possibility that she might be getting pregnant at a very young age. Her body might not be capable of bearing a child. She might face certain difficulties, and in general पूरे के पूरे मदरहुड को वो एक तरीके से प्रॉब्लम में डालता है. सो द एज वाज डेफिनेटली अ मेन इशू विथ रिस्पेक्ट टू मदरहुड. सेकेंडली, द इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन लेवल इन फीमेल्स एंड डिक्रीजिंग द मैटरनल मोर्टालिटी रेट. तो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखकर जो सबसे सही तरीका लगा वो यही था दैट वी मेक द एज इक्वल फॉर ऑल. सेकेंडली, देयर वाज अनदर पिटीशन फाइल्ड बाय अश्विनी कुमार उपाध्याय जहां पे उन्होंने यही सवाल उठाया था कि ये एज में डिफरेंस क्यों, और अगर ये एज में, शादी करने की एज में डिफरेंस है तो दिस इज सर्टेनली डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए अभी यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया है दैट दे आर गोइंग टू रेज द एज फॉर गर्ल्स टू गेट मैरिड फ्रॉम 18 to 21. Touching feet of women without consent amounts to outraging her modesty. So the facts of this case was that the accused, the moment he got to know कि जो neighborhood में the woman who lives, she would be alone at night because her husband is traveling to certain place. This person enters her house, and while she was sleeping, she could feel that somebody is touching her feet. The moment she woke up, she raised an alarm, and the accused ran away. जब इस person को चार्ज किया गया फॉर आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन, ही सेड कि इन जनरल द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट ही बिलोंग्स टू, वहां पे औरतों के पैर पड़ना या उनसे आशीर्वाद लेना एक कॉमन प्रैक्टिस है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग. सो ही कंसिडर्स द वुमन एज एन एल्डरली वुमन टू हिम, समबडी जो वो अपने मदर के लेवल पे देखता है और वो उसका आशीर्वाद लेने आया था. द क्वेश्चन वाज व्हाट वाज ही डूइंग एट द लॉन्ग नाइट आवर्स, क्योंकि वो टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जहां पे आप किसी का आशीर्वाद लेने जाओगे. सो कोर्ट ने यहाँ पे यही बोला दैट टचिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन विदाउट हर कंसेंट, दैट टू इन द डेड आवर ऑफ नाइट बाय अ स्ट्रेंजर, अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ अ मॉडेस्टी. और फिर कोर्ट ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हम वो कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं जिससे हम मॉडेस्टी
आउटरीच हुई है या नहीं हुई है उसको जज करेंगे. सो कोर्ट ने कहा द अल्टीमेट टेस्ट of ascertaining whether the modesty of a woman has been outraged is whether the act could be perceived as one which is capable of shocking the sense of decency of a woman. So, if the women understand that the touch was a bad touch, it was intended to sexually harass her, that will consider as an act outraging the modesty of a woman. Moving ahead, lack of violent resistance does not make act consensual. Yes. So the rape case that was filed against the accused contested that while he was committing the act, the women did not violently resist it. But कोर्ट का यहाँ पे ये मानना था कि इवन इफ द वुमेन डिड नॉट वायलेंटली रेजिस्ट इट, ऐसा वो कौन सा प्रूफ है जो शो करता है कि उस वुमेन ने अपना कंसेंट दिया था. तो अगर कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे किसी औरत ने अपना कंसेंट नहीं दिया है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स and there was no violent resistance, maybe it could be due to fear, maybe it could be due to certain kind of pressure, but अगर किसी भी तरीके से ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है that there was a proper consent, the act will be considered as non-consensual and it will amount to rape. So confirmed the rape conviction. The court confirmed the rape conviction after stating that the act could not be considered consensual simply because the victim did not violently resist it. एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114A का डिमांड ये है टू रिबट दिस प्रिजम्पशन देयर मस्ट बी पॉजिटिव एविडेंस let in by the accused and mere absence of violent or violent effort on the part of the victim certainly does not amount to consent. तो जब तक आप किसी और तरीके से ये प्रूव ना कर दो कि वहां पे कस्टम था, वहां पे किसी तरीके का कंसेंट था, जब तक आप सिर्फ ये बोलो कि बिकॉज द women did not violently resist it, so we are going to consider as a case of giving a wholehearted consent, तो वो यहाँ पे कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा. The next, wife living in husband's house entitled to maintenance. Now this maintenance is not something that court talks about, court is discussing, which takes place after divorce. This is the kind of maintenance we are discussing जो एक husband की जिम्मेदारी बनती है wife की basic necessities को देने के लिए. तो while they were married to each other, the husband used to completely neglect her. कोई भी basic necessity चाहिए उसके लिए उसको पैसे नहीं दे रहा है. And the women here was illiterate, unemployed and had no source of income. तो कोर्ट ने यहाँ पे यही बोला that a woman can be deserted even in the same house who is illiterate and had no means of livelihood, which is why maintenance must be granted. और कोर्ट ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया सेक्शन 125 CRPC. कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 25 का रिक्वायरमेंट है प्रूफ ऑफ नेग्लेक्ट, ना कि सेपरेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. तो सेक्शन 125 CRPC बोलता है that if there is a proof of neglect, that the husband has been neglecting the wife, it becomes a sure shot case of maintenance. Reproductive choice, a dimension of women's personal liberty decided by Delhi High Court. So here Delhi High Court allowed a woman to terminate her 28 weeks pregnancy because the fetus was suffering from substantial abnormalities. जनरली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वहां पे जो लिमिट है वो 24 वीक्स तक है. बट इफ इन सिचुएशन वेयर द वुमेन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस और मे बी द चाइल्ड हु वुड बी born with certain abnormalities जहां पे उसके लिए नॉर्मल जीना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, rather than bringing such child into the world, there have been lot of instances जहां पे कोर्ट ने इस तरीके का टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ किया है. एंड कोर्ट का यही मानना है that reproductive choice is a facet of reproductive rights of a woman and dimensions of her personal liberty enshrined under Article 21. So the women should be given all the liberty to decide whether she would want to continue with the pregnancy or not. Children of interfaith couple are entitled to be maintained by their father. अब ये एक थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन था जो कोर्ट ने फेस किया. So the mother father of the child separated years back and the child was raised by the maternal grandparents. Now maternal grandparents were basically Muslim और उन्होंने जो बच्ची थी उसको भी बड़ा किया as a Muslim. Now father is a Hindu and the daughter is a Muslim. यही रीजन था that they could not apply Hindu Adoption and Maintenance Act and so did Muslim personal law वहां पर applicable नहीं था.
स्पेशल मैरिज एक्ट इस पूरे मैटर में साइलेंट था। तब कोर्ट ने यहाँ पे एक बेसिक अप्रोच अप्लाई करी। कोर्ट अप्लाइड सीपीसी एंड सीआरपीसी, और कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पे रिलीजन के हिसाब से चीजें नहीं देख रहे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एज अ फादर अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेन हिज डॉटर, अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन। और अब उसमें रिलीजन कुछ भी हो, बदल दिया हो, कन्वर्ट कर लिया हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कोर्ट ने कहा यहाँ पर family court that every child, irrespective of their race, caste, or religion, has a remedy by way of suit or petition to claim maintenance. Under section 125 CRPC में भी exactly यही दिया है that father, irrespective of their faith or religion, profess should be maintaining his children. तो यहाँ पे even if there is a situation जहाँ पे हमारे पास lack of laws के कारण exact conditions नहीं fit हो पा रही है in the personal laws, we went ahead, the court applied the CPC and the CRPC and gave maintenance to the daughter where the daughter belongs to a different religion as that of her father. Non-availability of infrastructure for disabled violative of Article 21. Yes, the case is being filed by Jyoti Singh, who is a wheelchair-bound person, and uska ye petition hai, the women, that even though she is having proper wheelchair, in general she cannot access public places in the city. बस स्टॉप हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है जो कि डिसेबल्ड फ्रेंडली हो, जहां पे कोई भी पर्सन हु इज डिसेबल्ड कैन गो अहेड एंड एक्सेस ऑल सच पब्लिक प्लेसेस. So she went ahead and filed a case citing that if she is not able to access all such public places because of her disability and lack of infrastructure on the part of the government, it is violative of her fundamental rights. The Delhi High Court completely agreed to this, and they have decided to carry out an audit to see how the entire city's infrastructure can be made disabled friendly. And court did agree that yes, lack of infrastructure from the side of the government is a kind of violation of Article 21 of all such people. Section 143A of Negotiable Instrument Act, directly and not mandatory. So Delhi High Court, in the case of cargo and freight forwarded private limited versus state, went on saying कि in case there is an issue related to dishonor of check, अगर वहां पे इंटरिम कॉम्पनसेशन पे करने की बात आती है तो वो मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, इट इज जस्ट डायरेक्टरी इन नेचर. सो नॉट एवरी एक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक attracts interim compensation. So this is going to be considered the section 143A of Negotiable Instrument Act is a directory provision and not a mandatory. So with this, I am going to end the session here. I'll see you in the next session discussing more Supreme Court and High Court judgments in the month of January and parts of February. Thank you.